हेलो फ्रेंड, तमारू स्वागत है मारा किचन में। तो आज आपणे बनावीशुं सूका मगनुं शाक। तो तेना माटे मैं अहींया मगने 7 થી 8 कलाक माटे पाणी में पलाળી दीधा हता अने 7 થી 8 कलाक जेवुं थई गयुं छे अने मग एकदम सॉफ्ट एवा थई गया छे। तो हवे आपणे मगने पाणीथी बहार काढी लेशुं। बधुं पाणी मगनुं नितारी लेशुं। तो पाणी बधुं उतरी गयुं छे। तो हवे आपणे शाक बनावशुं। तो कुकर में आपणे मोटी 2 चमची तेल एड करशुं। तेल थोड़ुं गरम थाय पछी तेमां 1 चमची राई एड करशुं। राई थोड़ी फूटे पछी तेमां लसणनी कळीओ एड करशुं। हवे तेमां अर्धी चमची हींग नाखशुं। मीठा લીમડાના पान थोड़ा एड करशुं। तेने सारी रीते मिक्स करी लेशुं। हवे तेमां मगने एड करी देशुं। मगने पण आपणे सारी रीते मिक्स करी लेशुं। तो हवे तेमां आपणे अर्धी चमची हळदर पाउडर अने 1 चमची लाल मरचुं पाउडर अने थोड़ो एवो गरम मसालो 1 चमची नमक एड करी अने सारी रीते मिक्स करी लेशुं। 1 मिनिट जेवुं आ रीते ज हलावशुं। तो 1 मिनिट जेवुं थई गयुं छे। हवे तेमां पाणी एड करशुं। पाणी आपणे मग डूबे तेटલું જ ઉમેરશું। तो हवे तेने कुकरનું ढांकणું बंद करी अने 3 विसल पाड़ी लेशुं। 3 विसल पड़ी गई छे अने मग आपड़ा एकदम बनी गया छे। तो हवे तमे जोई शको छो के मग एकदम सॉफ्ट एवा थई गया छे। तो हवे तेमां 1 चमची धाणा जीरुं अने 1 चमची खांड લીંબુનો रस एड करशुं उपरथी अने बधुं सारी रीते मिक्स करी लेशुं। अने हवे तेमां उपरथी લીલી સમારેલી કોથમીર એડ કરશું અને કોથમીરને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો શાક આપણું બની ગયું છે। તો આ શાકને તમે લાપસી કે દાળ ભાત રોટલી સાથે સર્વ કરી શકો છો। શાક એકદમ સ્વાદિષ્ટ એવું બનશે। તો ટ્રાય કરજો। તો આજની રેસીપી તમને કેવી લાગી તે મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો અને વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। અને આવા નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા। ફરી મળીશું એક નવી